Hello friends, now today we will see example number 3. Example is in front of your screen. Now in this example, there is a one variety. Variety is what? That now in this example existing capital is also given. Means this is an existing company. In example number 1 and example number 2, directly it was given that company requires so much amount of funds. और हमने उसको कैलकुलेट किया. लेकिन अभी इस यहां पर दिया है कि अगर आप एग्जांपल देखोगे तो एग्जांपल में सेकंड आइटम दिया है कि द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 each and 70% टर्म लोन ऑफ रुपीज 20 lakhs. मींस एग्जिस्टिंगली अभी कंपनी के पास ऑलरेडी कैपिटल है और अभी कंपनी को एडिशनल कैपिटल रेज करना है. एडिशनल कैपिटल कितना रेज करना है? तो यहाँ पर फर्स्ट इसमें दिया है कि कंपनी इट इज इसेंशियल दैट इनिशियली सम ऑफ रुपीज 40 lakhs विल बी नीडेड. इसका मतलब अभी कंपनी के पास ऑलरेडी कुछ कैपिटल है और एडिशनली 40 lakhs का कैपिटल और रेज करना है. तो इसके लिए हम अभी यहाँ पर जब कैपिटल हम करेंगे तो हमको पहले अभी एग्जिस्टिंग कैपिटल भी लेना पड़ेगा. अभी एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑब्वियसली दोनों ऑप्शन में आएगा बिकॉज एडिशनल 40 lakhs जो हमको रेज करने हैं उसके लिए दो ऑप्शंस दिए हमारे पास. लेकिन जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है उसको तो हमको दोनों इसमें लेना कंपल्सरी लेना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो हमारा एग्जिस्टिंग कैपिटल को नोट डाउन करते हैं. चेक आउट इन सेकंड पैराग्राफ में दिया है द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ ए 50,000 equity shares of rupees 100 each. So 50,000 shares are there which is 100 rupees each. So amount of equity capital will be 50,000 plus 50,000 multiplied by 100, that comes to 50 lakhs. So check out equity, इसको मैंने existing नाम दिया है, existing equity capital. So existing equity is rupees 50 lakhs in both the cases, both the option. Next, existingly 17% term loan of rupees 20 lakhs is also there. So 17% term loan it is already there. इसको भी मैंने existing नाम दिया है. 17% term loan which is existing rupees 20 lakhs in each case. Okay, so it means existingly company is having the total capital of rupees 70 lakhs and now company want to raise additional capital of rupees 40 lakhs. So after raising the additional capital, total capital कितना बन जाएगा? 50 plus 70, 50 plus 20, existing 70 lakhs plus additional 40 lakhs. So after the expansion, the total capital will be rupees 1 crore 10 lakhs. So अभी जो एडिशनल कैपिटल 40 lakhs रेज करना है उसके लिए हम ऑप्शन चेक करते हैं क्या है. उसके लिए ऑप्शंस दिया है. द फर्स्ट ऑप्शन टू रेज 20 lakhs by sale of equity shares of rupees 100 each and balance at 18% term loan. So पहला ऑप्शन हमारे पास ये दिया है, हमको टोटल 40 lakhs रेज करना है और इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, तो 20 lakhs by way of equity shares. So यहाँ पर एडिशनल इक्विटी शेयर्स आएंगे 20 lakhs. So additional equity capital will be 20 lakhs. This is of rupees 100 each both. Okay. और दूसरा क्या दिया है, तो रिमेनिंग 20 lakhs by way of 18% टर्म लोन. सो यहाँ पर 18% टर्म लोन आएगा. सपोज मैं यहाँ पे इसको न्यू कहता हूँ. एग्जिस्टिंग की भी हमारे पास एग्जिस्टिंग 17% टर्म लोन है, अभी 18% टर्म लोन आ गया न्यू. कितना आ गया? 20 lakhs. चेक आउट वंस अगेन. एग्जिस्टिंग कैपिटल 50 lakhs इक्विटी एंड 20 lakhs टर्म लोन. एडिशनल जो 40 lakhs रेज करना है उसके लिए क्या हमको ऑप्शन दिया है, रुपीज 20 lakhs बाय वे ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 each एंड रिमेनिंग 20 lakhs बाय वे ऑफ 18% टर्म लोन. सो इसका मतलब ऑप्शन 1 के अंदर क्या होगा, दो इक्विटी कैपिटल एग्जिस्टिंग और न्यू और दो टाइप्स के लोन, एक 17% टर्म लोन विच इज एग्जिस्टिंग एंड 18% टर्म लोन विच इज न्यू. सो टोटल कैपिटल विल बी आफ्टर दिस 1 crore 10 lakhs. Now check out option number 2. Option 2 में क्या दिया है, to raise rupees 20 lakhs, sorry, to raise entire amount by sale of equity shares of rupees 100 each.
सो सेकंड ऑप्शन में हमको ये कहा गया है कि जो एंटायर अमाउंट मींस एंड को एडिशनली कितना रेज करना है 40 lakhs. That 40 lakhs will be raised entirely by way of equity capital of rupees 100 each. इसका मतलब यहाँ पर एडिशनल इक्विटी कैपिटल कितना आएगा एंटायर 40 lakhs और 18% टर्म लोन 0. So total capital will be 1 crore 10 lakhs. You can check out. Now दोनों फाइनेंसिंग ऑप्शन अभी क्या हुआ ऑप्शन 1 के अंदर एग्जिस्टिंग इक्विटी 50 lakhs additional equity 20 lakhs. So total equity will be 70 lakhs. 17% term loan existing 20 lakhs and 18% term loan new 20 lakhs. So total 1 crore 10 lakhs. In option number 2, existing equity 50 lakhs, additional equity 40 lakhs. So total equity will be 90 lakhs and existing 17% term loan 20 lakhs. टोटल 1 करोड़ 10 lakhs. ये एक बार आपके समझ में आ जाता है तो नीचे हमको कैलकुलेशन करने के लिए आसान हो जाता है. Now again, after all, what we have to do? We have to find out EPS. By our standard format, EBIT minus interest is equal to earning before tax minus tax is equal to earning after tax minus preference dividend if any divided by number of equity shares. We will get EPS. So first EBIT. अभी EBIT हमारे पास एग्जांपल में दिया है रुपीज 50 lakhs 15 lakhs. EBIT हमको एग्जांपल में डायरेक्टली दिया है 15 lakhs each. नाउ लेस इंटरेस्ट. अभी इंटरेस्ट के बारे में यहाँ पे क्या है कि ऑप्शन 1 के अंदर हमारे पास दो टाइप के लोन हैं. एक एग्जिस्टिंग लोन है 17% टर्म लोन. अभी नया लोन हम रेज करेंगे 18% टर्म लोन. सो यहाँ पे इंटरेस्ट ये दोनों लोन का इंटरेस्ट हमको कंसीडर करना पड़ेगा. इसके लिए मैंने यहाँ पर दिया है इंटरेस्ट एग्जिस्टिंग एंड इंटरेस्ट एडिशनल. सो एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट दोनों ऑप्शन में आएगा और एडिशनल इंटरेस्ट सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में आएगा. सो एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट कितना है एग्जिस्टिंग 17% टर्म लोन अमाउंट इज रुपीज 20 lakhs and interest rate is 17%. So 17% of 20 lakhs that comes to 3 lakhs 40,000. You can check out it on calculator. 17% of rupees 20 lakhs that comes to 3 lakhs 40,000. Now additional interest. Additional interest will come only in option 1. Option 1 additional loan will be raised by way of 18% term loan rupees 20 lakhs. So additional interest 18% of 20 lakhs. If you check it on calculator, that comes to 3 lakhs 60,000. The additional interest in case of option 2 will be 0. Now we have to find out earnings before tax. So here earnings before tax in first option 15 lakhs EBIT minus existing interest 3 lakhs 40,000 minus additional interest 3 lakhs 60,000. दोनों इंटरेस्ट माइनस करने के बाद में EBT will be rupees 8 lakhs. You can check out on calculator. Whereas option 2 15 lakhs minus 3 lakhs 40,000 that will come to rupees 11 lakhs 60,000. You can check out EBT under option 1 8 lakhs under option 2 11 lakhs 60,000. Now next one is tax. So tax rate. Tax rate is given in the example 40%. यहाँ पर tax rate दिया 40% tax हमको calculate करना है. So 40% tax of 8 lakhs that comes to 3 lakhs 20,000, whereas 40% of 11 lakhs 60,000 that comes to 4 lakhs 64,000. You can check out on calculator. 40% of 8 lakhs 3 lakhs 20,000. Here 40% of 11 lakhs 60,000 that comes to 4 lakhs 64,000. Now earnings after tax 8 lakhs minus 3 lakhs 20,000 that comes to 4 lakhs 80,000. And option 2 11 lakhs 60,000 minus 4 lakhs 64,000 that comes to 6 lakhs 96,000. So check out, this is earnings after tax. Option 1 4 lakhs 80,000, option 2 6 lakhs 96,000. Now in this case, in this example,
In any of the option, preference shares are not given. So now no requirement of deducting preference dividend. So directly हमने जो ये हमको अर्निंग आफ्टर टैक्स मिला है इसको हम डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से. सो डायरेक्टली हमको ईपीएस मिल जाएगा. So now what we have to calculate, that is number of equity shares. How to calculate? Check out here. तो total equity capital कितना है अभी इन ऑप्शन का existing 50 lakhs, additional 20 lakhs. So total capital is 70 lakhs. Each share is of rupees 100 each. So 70 lakhs divided by 100. So number of equity shares will be 70,000. Option 2. How much is total equity capital? Existing 50 lakhs, additional 40 lakhs. So total equity capital will be 90 lakhs. And each share is of rupees 100 each. So 90 lakhs divided by 100, that comes to 90,000. So number of equity shares, option 1 70,000, option 2 90,000. Now what next? EPS. How to get EPS? This is earnings after tax divided by number of equity shares. यहाँ पे अगेन आप समझने की कोशिश करो, यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, इसके लिए हमने वो स्टेप को कट कर दिया. हमने पहले एग्जांपल में क्या देखा था, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, और फिर हमने वो अमाउंट को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से डिवाइड किया. लेकिन यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, इसके लिए वो स्टेप हमने ओमिट कर दिया. डायरेक्टली अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. सो ऑप्शन 1 4,80,000 divided by 70,000. So EPS is 6.86. Check out 4,80,000 divided by 70,000. So EPS is equal to 6.86. Whereas option 2, earnings after tax 6,96,000 divided by number of equity shares 90,000. That comes to 7.73. This is an EPS. EPS is obviously in rupees. So EPS under option 1 6.86 rupees and option 2 7.73. Our objective is to maximize the wealth of equity shareholders in terms of EPS. So obviously we will select that financing option where the EPS is highest. Amongst these two options, EPS is highest in option 2, that is 7.73. So we will select this option for raising the funds of 7.73. So this is how to solve example number 3. In example number 3, the variety is that existing capital is given and additional capital is given. That is the only change. I hope you have understood this example. If you get any query, you can ask that query through comments or through WhatsApp. That I will solve your query, but I don't think any query will be there. Now tomorrow we will solve example number 4. Thank you very much.